चार्जर भी ले जा नीचे, जब देख रहे तब चार्जिंग भी लगा दी, जा नीचे ले जा। नानी से दूध बनवा रहे ठंडा अपना। Good evening, my dear students. So today we will continue with where we have left off in the last class. We were discussing the poem Childhood, if you remember. Okay, it is a very beautiful poem, you know, where one can relive the memories of childhood. और जो पोएट है वो बहुत ही थॉटफुल क्वेश्चंस पूछता है अपने आप से, अपने रीडर्स से, कि कब चाइल्डहुड एंड होता है और कब एडल्टहुड बिगिन होता है, क्या उसका कोई पर्टिकुलर टाइम है। तो एज सच कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, रादर देयर आर डिफरेंट इंस्टेंसेस। ओके, उसकी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंसेस आते हैं, like for example when he turns 11 or after 11, when he came to realize कि heaven और hell are all in our imagination। ठीक है, ये हमारे ब्रेन का इमेजिनेटिव पार्ट है, बिकॉज these spaces cannot be find on a map, on a physical map or in the subject of geography। तो चाइल्डहुड से वो ट्रांजिशन करता है इनटू द फेज ऑफ रैशनैलिटी। ओके, रैशनैलिटी की थीम है, वेरी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम दैट इज बीइंग टच्ड अपॉन इन द पोम, और ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा भी था। तो फर्स्ट स्टैंजा में ही वो इंस्टेंस देता है हमें रैशनलिज्म का, कि व्हेन ही सेज दैट हेवन एंड हेल don't exist, they are like imaginary places। okay, and where we can see them, we can only see them in our mental mind। okay, physically, or there is no spaces as are being projected by people। so basically in the entire poem, he begins his poem and he ends the poem with the same question: where did my childhood go? So then that was again a poetic device, if you remember we had discussed it। अभी हम इन द अपकमिंग स्लाइड्स हम एक बार दोबारा टच करेंगे पोएटिक डिवाइसेस को। so that was a refrain। okay, refrain means that when you use particular groups of words again and again in the poem। okay, so that is a poetic device। और इस डिवाइस को यूज करने का उसका पर्पस क्या है? यू कैन गेट अ क्वेश्चन। ओके, यू कैन बी आस्क्ड that what is the purpose of poet, or why is the poet using the same sentence again? So then you have to answer that the poet is using this phrase again because he wants to emphasize that feeling, you know, of that feeling of losing one's childhood and entering into the stage of rationality, but he cannot define it exactly when did he lose his childhood and when he stepped into the realm of adulthood। ठीक है, तो इस फ्रेज को बार बार मेंशन करने का जो पोएट का एम है वो यही है, टू शो हिज फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ लॉस। ठीक है, चाइल्डहुड वॉज हिज ओन फेज, इट वॉज अ पार्ट ऑफ हिज ओन लाइफ, एंड नाउ ही हैज लॉस्ट दैट फेज एंड एंटर्ड इनटू अ न्यू फेज। ओके, so that sense of loss, that sense of pain of losing his childhood is there, and you know it is reflective in these sentences। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में वो फीलिंग रिफ्लेक्ट होती है कि ही इज गोइंग टू मिस हिज चाइल्डहुड, और ही इज ऑलरेडी मिसिंग हिज चाइल्डहुड, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम childhood is all about innocence। okay, innocence and love and happiness all around। बच्चे इन्हीं सब चीज़ों में बिलीव करते हैं, आप जो उन्हें बताते हैं दे बिलीव। ओके, सो चाइल्डहुड इज फॉर देम अ ब्यूटिफुल फेज वेयर एवरीथिंग इज, यू नो, रोजी, हैप्पी गो लकी चिल्ड्रन, जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि मौज मस्ती में रहने वाले। बट after being turning up as an adult, okay, growing up in the phase of life, now he has realized, the poet has realized, and along with the poet the readers have also realized, ये हम सब ने भी realize किया है, because now we are grown ups, we are adults, that life is not as we believe in childhood। it is you can say completely different,
or very much opposite. Okay, so this was the last stanza of the poem that we discussed, and according to him, now his childhood has gone to a forgotten place. Why forgotten place? Because now it will never come back. Okay, लाइफ का एक वो फेज है जो उसने जी लिया. ओके, वो पास हो गया और अब वो फेज वापस नहीं आएगा. इट हैज बीन फॉरगॉटन, इट हैज बीन हिडन, इट हैज बीन इनविजिबल. ओके, so that phase is invisible, that period is invisible, and now where he can see the childhood? अब वो अपना childhood तो उसने जी लिया, but now where he can see the glimpses of childhood in the faces of infants. Okay, छोटे बच्चों के chubby और angelic faces में the poet can see the glimpses of childhood. Okay, so in your answer you can write it down like this, that the poet sees glimpses. Glimpses means views. Okay, बीच बीच में से जो views आते हैं किसी भी event के या किसी भी phase के, तो the poet sees glimpses of childhood in angelic babies faces. Okay, angelic word is, you can use the word angelic. Angelic again means innocent. ठीक है, innocence. That's all I know. So that is the thing that he knows, that where did my childhood go? It had went to some forgotten place. The name of the place he doesn't know. He only knows that now for him the childhood exists in the faces of an infant. Okay, in the faces of innocent children. Okay, that's all I know. That is all he knows. Now these were the poetic devices that are being used in the poem to enhance its meanings. Antithesis, we had discussed this also, right? When two opposite words are used together in a sentence in a poem. So the example of antithesis is hell and heaven. In the first stanza he says that hell and heaven do not exist. So hell in general means, it is for the place where you go after doing bad deeds, the bad, and heaven signifies good. So bad and good both are opposite in meaning, opposite in nature, but both of these words are coming together. So this is an example of antithesis. Anti means opposite. Okay, alliteration, all of us know. We have seen many examples of this poetic device in many of the poems. The occurrence of the same letter or sound at the beginning of closely connected words. The time, so the same letter is being repeated. Okay, and the words are coming together. If you see consecutive words, my mind, my mind, whichever way. So the sound of W, thoughts, that. Okay, so these are the examples of alliteration. Inversion, when the subject verb order is reversed, यानी कि verb पहले आ गया और subject बाद में आया. जो general order होता है, that is SVO, that is subject verb. Okay, that the subject is followed by verb. And subject कौन होते हैं आपके? The people. Okay, the about whom you are talking. And the verbs, your action words, कि वो क्या action कर रहे हैं sentence में, जब वो बताते हैं, that is verb, subject verb order. So that is a proper order that we follow in the language. But here inversion means ulta. Okay, now here we have done the opposite of that order. Here the verb is being followed by a subject. So the verb is use. Okay, use, काम आना, to use whichever way I choose, and this is your subject. Okay, so here the verb is followed by the subject instead of subject being followed by verb. So this is an example of inversion. So you can get a question that do tell about the various literary devices that are being used in the
poem, so then you can mention it. Now we can have a look at some of the important questions that cover up the summary also, okay, and the major themes. My point of including these questions in long and short form is कि you can see the poem, okay, you can understand the poem from all the perspectives कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग आंसर फॉर्म में भी और शॉर्ट आंसर फॉर्म में भी. Generally for the poem you can guess a reference to context question also. So for that case, you know, you have to be very well aware of the content of the poem. So I would suggest that you definitely give twice or thrice reading of your poem and in fact of your lessons also, क्योंकि आप reference to lines context questions तभी आंसर कर पाएंगे जब आपने चैप्टर को या पोम को अच्छे से रीड किया हो, ओके. क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हु इज आई इन द अबव लाइन्स या हु इज बिंग दिस रेफर टू डैश एंड डैश. आप मीनिंग बता सकते हैं, बट जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो माइन्यूट डिटेल्स आप पूछते हैं, दैट यू कैन ओनली आंसर व्हेन यू हैव रीड योर poem very well, okay. So there are some questions, important questions that we can have a look at. How does the poet take the loss of his childhood? Okay, so इसमें क्या क्या फीलिंग्स आती हैं पोएट के दिमाग में. सबसे पहले एक फीलिंग ऑफ सैडनेस है, ओके, यू कैन रीड दिस आंसर्स आफ्टरवर्ड्स. एक फीलिंग ऑफ सैडनेस है, नॉस्टैल्जिक है वो, ये वर्ड भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है. और एक सेंस ऑफ मिसिंग है, सेंस ऑफ लॉस है. That he has lost the innocence of childhood. He feels that the loss of childhood is a great loss because it is only in childhood that one trusts others and does not start finding faults with others. तो ये जो फीचर है ये हम कब डेवलप कर लेते हैं कि हम हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करते इजीली. ये वाला फीचर हमारा एडल्टहुड में डेवलप होता है, ओके. तो अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हेन डज द पोएट फील दैट ही हैज बिकम मैच्योर एंड एडल्ट. Mature and adult that at the age of 11 that he attained the childhood. अब उसने स्पेसिफिकली कोई एज नहीं दिया है, वो बार बार इंस्टेंसेस गिनाता है, ठीक है. तो यू कैन आंसर दैट परहैप्स और मे बी, ठीक है. हम पूरी एश्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि इट वॉज एट द एज ऑफ 11, बट यू कैन राइट मे बी और परहैप्स, ओके, बिकॉज द पोएट हिमसेल्फ इज नॉट श्योर. He began to distinguish between fact and fiction. Fact and fiction means जो सच है और fiction जो imaginary है, ठीक है. So he started knowing the difference between real versus imaginary world. ये important words हैं that you can use in your answer. You can get questions like these also कि किस तरीके से ये theme explore हुआ है, okay. रियल वर्सेस इमेजिनरी. इमेजिनरी, इनोसेंस, ये सारा चाइल्डहुड का पार्ट है, और रियल लाइफ, लॉजिकल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ, ये सारा एडल्टहुड का पार्ट है, ओके. इन चाइल्डहुड ही बिलीव्ड इन हेल एंड हेवन, केयर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स, बट he believed in hell and heaven and he didn't care now, and he knows now, okay, he knows that these are imaginary concepts and that they do not exist in reality. What is the attitude of the poem towards the past? The poet finds the adults to be hypocrites. They pretend to be what they are not in reality. They talk of preaching love, but do not put love to real use. Poet towards the past, poets towards the adulthood, okay. adulthood को poet ने थोड़ा सा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लाइट में पोर्ट्रे किया है, बट नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा फोकस में आए हैं, बिकॉज ही हैज मेंशन दैट फॉर हिम एडल्ट्स आर हिपोक्रिट्स, ठीक है. दे आर मैनिपुलेटिव, दे आर क्राफ्टी, दे आर डबल फेस्ड. डबल फेस मतलब दो चेहरे. क्राफ्टी मतलब कि आप अपने पर्पसेस के हिसाब से, आप अपने रीजंस के हिसाब से चीज़ों को मोल्ड कर लेते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं, ठीक है. कि एक मोमेंट में आपके लिए उस चीज़ का मतलब कुछ और है और एक मोमेंट में आपके लिए उस चीज़ का मतलब कुछ और है. लाइक इन द लास्ट क्लास मैंने डिस्कस्ड, इफ यू रिमेंबर, वी डिस्कस्ड कि आई टोल्ड यू that how I have seen people, and this is a real example that I'm telling you. Now, obviously I won't share the personal details, but this thing I have observed
on my own. It's a part of my own experience. I have seen people, speaking very high thoughts on the topic of, that all of us are equal, equality should be there, that we should not treat anyone as low कास्ट और हाई कास्ट की, हमें कास्टिज्म पे बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए. लेकिन सच में अगर आप बात करते हैं, ठीक है, अगर आप सच में देखते हैं तो आज भी, इनफैक्ट हमेशा से ही और आज भी और आई थिंक आगे भी, क्योंकि इतनी जल्दी लोगों का परसेप्शन और माइंडसेट बदलना इज़ वेरी डिफरेंट थिंग. तो आज भी लोग कास्टिज्म पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं. like there are many people who do not want to marry outside their caste. ठीक है, so that is again an example of believing in caste system. आप बाहर जाकर स्पीच देते हैं इन द फ्रंट ऑफ सोसाइटी, इन फ्रंट ऑफ पीपल, मैनी पीपल, एंड यू गेट योर शेयर ऑफ अप्लॉज, कि बहुत तालियां मिलती हैं आपको. सो दैट इज वॉट ही इज ट्राइंग टू फोकस, द पोएट इज ट्राइंग टू फोकस, कि वी आर समथिंग एल्स इन पब्लिक, and when it comes to follow those things, when it comes to follow love in our own life, we are exactly the opposite. हम उस चीज़ को बिल्कुल फॉलो नहीं करते. That's why he called adults are hypocrites. कि आप बातें प्रीच करते हैं आप लव को, ठीक है, that we should love everyone, we should treat everyone with equality, everyone is equal, but एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में आप उस चीज़ का बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हैं. ठीक है, कि ऐसे बहुत लोग होते हैं जो अपने घर में, जैसे जो भी लोअर स्ट्राटा को बिलोंग करते हैं, उनको अपने घर में एंट्री भी नहीं होती है. ठीक है, आप अपने घर में उनको अपने साथ नहीं बिठाते हैं, अपने साथ आप खाना नहीं खिलाते हैं, या इनफैक्ट देयर आर मेनी पीपल हु इवन डू नॉट अलाउ देम टू एंटर द प्रेमाइसेस ऑफ देयर हाउस. ठीक है, उनके लिए बाहर ही सब आउटसाइड द हाउस दे हैव टू सिट इफ दे हैव कम फॉर सम वर्क. ठीक है, and there is a sense of demarcation at every point of their behavior. What differentiates childhood from adulthood? So this is important, this question. इसमें आपको वो पर्टिकुलर वर्ड्स, वो थॉट्स मिलेंगे जो आप यूज ऑन कर सकते हैं अपने आंसर्स में, कि चाइल्डहुड और एडल्टहुड पोएट के लिए डिफरेंट कैसे है. तो चाइल्डहुड उसके लिए क्या सिग्निफाई करता है और एडल्टहुड उसके लिए क्या सिग्निफाई करता है. तो अगर हम अपनी जो हमने रीडिंग, जो हमने एक्सप्लेनेशन किया है, उसमें जो हमारे आंसर्स हैं, चाइल्डहुड पोएट के लिए सिग्निफाई करता है इनोसेंस. ठीक है, और एडल्टहुड क्या सिग्निफाई करता है, रियलिटी. ठीक है, चाइल्डहुड में इट्स अ मेक बिलीव सिस्टम. मेक बिलीव मतलब जो कह दिया वो मान लिया. ओके, लेकिन एडल्टहुड में क्या है, यू हैव योर ओन थॉट्स. रिमेंबर दैट ही सेज दैट माई माइंड इज माई ओन नाउ. ही कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. चाइल्डहुड में द फैकल्टी ऑफ रीजन इज नॉट डेवलप्ड. ओके, पावर ऑफ रीजन इज नॉट डेवलप्ड. तो ये पॉजिटिव साइड है एडल्टहुड की, कि आपकी जो पावर ऑफ रीजन है वो डेवलप हो जाती है, मतलब आप अच्छा बुरा सोचने में समर्थ हो जाते हैं, जो कि चाइल्डहुड में नहीं होता. ओके, पावर ऑफ रीजन इज डेवलप्ड. तो दिस कैन बी सेड एज अ पॉजिटिव पॉइंट. रेस्ट फॉर हिम आर द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ adulthood. Okay, so basically what he wants to want ki for him it is like this thing ki, for him it is like this thing ki whatever he has learned in the childhood, that is different from the adulthood. Okay, and there are negatives and positives both in the phase of adulthood. नेगेटिव किस सेंस में है कि हिपोक्रेट्स और हिपोक्रेसी की थीम को एक्सप्लोर किया है, एंड पॉजिटिव किस सेंस में है, दैट आप अच्छा बुरा, खुद का अच्छा बुरा, औरों का अच्छा बुरा समझने के लिए कैपेबल हो जाते हैं. ओके, योर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, योर द पावर ऑफ थिंकिंग जिसे हम कहते हैं. ठीक है, हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है वो डेवलप ऑन हो जाती है. फाइन, so that is what he is trying to say. So is there any development of thoughts in the poem? Yes, there is a well planned development of thoughts in the poem. It's a journey from when to where. The first 3 stanzas are directed towards time. Okay, so this is important. The theme of time is also being explored.
और वो तो है ही, क्योंकि the different phases are being explored, right? But the last stanza is directed towards the place. The part in the last stanza comes to embrace the reality. The poet, sorry, it should be poet, that his childhood lies in the innocent face of an infant. But now in the last stanza, he has accepted that his childhood has gone, and now he would be able to, get a glimpse of his childhood only when he will look at the faces of infants. ठीक है? So वो realization dawn हो गया है इसके ऊपर, that and he has accepted that fact. जैसे कि if you remember in the poem a photograph also, at one point the mother also realizes that her childhood will never come back, and she accepts that reality. So a question can also come कि to draw a comparison, between both of them. तो आप comparison कैसे draw करेंगे, that is the point. Okay, आप उस तरीके से उसको ड्रॉ कर सकते हैं. वो हम भी एक क्वेश्चन हम देखेंगे उसको कि हम किस तरीके से उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. What according to the poem is the involved in the process of growing up. Okay, poem के according कि the thing is कि poem के according is involved in the process of growing up. The loss of childhood is involved in the process of growing up. अब ये देख रहे हैं आप, दो ऑपोजिट बातें हैं. ठीक है, एक जगह लॉस हो रहा है एक पर्टिकुलर फेज का, और दूसरी जगह उसी फेज का गेन अप हो रहा है. ठीक है, सो देयर इज दिस टॉक ऑफ ऑपोजिट्स, gaining of one phase and losing of one phase. So that is what life is all about. Okay, losing is giving way to gaining of another phase. Okay, so that is the thing. This loss is compensated by some gains which come with adolescence. ठीक है, this loss is compensated by some gains which comes with adolescence. means कि although there is a sense of loss, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी there are certain things that is good in adulthood, and number one, that is that your power of thinking, your power of reason is developed. Okay, number one. Number two, your sense of right and wrong is developed. That means you are able to take a good decision, after considering all the पॉइंट्स ऑफ व्यू. ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इमोशंस में आके कोई डिसीजन ले लिया, या आपने सिर्फ प्रैक्टिकलिटी देखी. नो, जब ह्यूमन माइंड कम्प्लीटली डेवलप होता है, जब ह्यूमन माइंड को हम कम्प्लीटली मेच्योर कहते हैं, तो दैट मीन्स कि ह्यूमन माइंड सारे पर्सपेक्टिव्स को ध्यान में रखकर एक डिसीजन लेते हैं. राइट, so what are the things that the human mind has learned, or what are the things that the poet has learned? That is increase in the power of understanding, rationalizing. तो ये word ज़रूर use करना है, because this is your theme. Okay, one of the theme that is being used in the poem. And discrimination, that is discriminating between right versus wrong, as well as a sense of individuality and self confidence. तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आया है और वो इंडिविजुअलिटी भी आई है. इंडिविजुअलिटी मतलब इंडिविजुअलिटी इसलिए कि आप अब अपने एक्शंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, आप खुद एक्शंस ले सकते हैं. ठीक है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इसी चीज़ से आया है, that when you have started taking actions on your own. Which do you think are the most poetic lines? वाई? तो मोस्ट पोएटिक लाइन्स मतलब कि वो लाइन्स जिस पे सबसे ज़्यादा मतलब जो पोम की थीम है और जो एंटायर ओवरऑल जो उसका रिफ्लेक्शन है, द पॉइंट ऑफ व्यू है, वो रिफ्लेक्ट होता है. ठीक है, वेरी पोएटिक एंड वेरी क्रिएटिव. सो द लाइन्स अकॉर्डिंग दिस इज द फॉलोइंग लाइन्स इन द poem are most poetic. It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. So these lines are most poetic because it sums up, the entire theme of the poem. These lines are summing up the entire crux of the poem, entire idea of the poem. And the entire idea is what? That you are losing one phase and thereby gaining another.
These lines beautifully sum up the process of growth and the disappearance of a particular stage of life. ठीक है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है. डिसअपियर तो हो रही है, ठीक है, एक एक पर्टिकुलर फेज डिसअपियर हो रहा है, राइट. एक पर्टिकुलर फेज डिसअपियर हो रहा है, बट द थिंग इज कि आप उस चीज को कैसे ले रहे हैं. फाइन, आप उस चीज को कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं. These lines have a figurative or metaphorical meaning also. The innocent face hides many things and it smiles. Perhaps the childhood lies hidden in some forgotten place, lying buried deep inside a child's consciousness. जो उसका चाइल्डहुड है, जो खो गया है, वो किसी पर्टिकुलर फॉरगॉटन प्लेस पर है. और अब उसे चाइल्डहुड कहाँ दिखता है, अब उसे चाइल्डहुड हर इनोसेंट बच्चे के फेस में दिखता है, ठीक है, उसके स्माइल्स में दिखता है. तो these lines sum up the process of growth and the disappearance of a particular stage of life. पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ यहाँ पर कौन सा है, चाइल्डहुड. ठीक है, चाइल्डहुड चला गया है और उसकी जगह अब एडल्टहुड आया है, कि जो एक नया फेज है, जो पोएट को बहुत कुछ सिखाने वाला है. ठीक है, द पोएट इज गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स विद दैट फाइन. So now coming to this thing, how did the speaker realize the hypocrisy of the adults? Another question, another important question on the theme of the poem. It is another of the themes. ठीक है, the speaker noticed a wide gulf between what adults appear to be and what they actually were in real life. So gulf, you can use another word, gap. There is another word that you can use, discrepancy. Okay, that there is a huge discrepancy of what adults preach and what they are actually. There was apparent contradiction between their words and deed. तो पोएट जब बड़ा हुआ, जब उसे इस चीज़ का रियलाइजेशन आया, तब उसने लोगों के एक्शन में यही देखा कि कैसे जो हम लोग कहते हैं, ठीक है, जो लोग कहते हैं और जो एक्चुअल में होता है, हाउ देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ different kind of, what you can say, a different kind of perception in both the phases. कि childhood में हम कैसा समझते हैं that everything is rosy, everything is good, but actual में when we turned up to adults तो वो rosiness रहता नहीं है. Okay, that is being covered up by manipulativeness. You can use these words, manipulative, crafty, deceit, practice and preaching different. ठीक है, so these words you can use because it would look good if you are going to use different words when it coming to different answers. तो ये जो सारे features उसने बताए हैं, these are something that he is finding in adulthood. ये पोएट का परसेप्शन है. ठीक है, हालांकि उसने एडल्टहुड का रैशनलिज्म और रीजन भी देखा है, बट ये जो मेन चीज़ें हैं दैट बॉदर्स हिम, और उसने एक सरकास्टिक उसको वे में एक्सप्रेस किया है दैट एडल्ट्स आर नॉट what we children believe, and they are different from what they preach and they practice. Okay, so manipulative, crafty, deceit, and practice and preaching different. The speaker noticed a wide gulf between what adults appear to be and what they actually were in real life. There was apparent contradiction between their words and deeds. जो वो कर रहे हैं, ठीक है, और जो एक्चुअल में हो रहा है उस पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. They talked of love and advised others to love, but they never themselves acting lovingly. So they are talking of love, they are preaching of love in different places, but in actuality they are not following it. ठीक है, दिस इज अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में उसको कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिस्कवरिंग द डिफरेंट थीम. Childhood is an essential state in the process of growing up, but it can go on forever discussed. तो मतलब ऐसा आ सकता है कि you are given a quote based on the meaning of, कोई भी quote आ सकता है आपको based on the meaning of the poem of meaning of poem,
ऑन द थीम ऑफ पोम, और आपको उसी कोट को इलेबोरेट करना होगा, ठीक है। तो उसमें आपने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना होता है, आपने वॉट एवर इज बींग यू हैव लर्न फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर पोम, आपको उसे मेंशन करना होता है। Childhood is an essential state in the process of growing up, but it can't go on forever. Childhood is an important stage in the process of growing up of every person. The human infant is totally dependent on others, but during childhood he starts gaining physical, emotional, mental strength. जो इन्फेंट होता है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है, बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे बच्चा ग्रो अप करता है, तो वो पर्टिकुलर चीज़ें धीरे धीरे उसको समझ में आने लगती है, फाइन। वो एंड नाउ धीरे धीरे उसकी पावर ऑफ रीजनिंग, पावर ऑफ रैशनलाइजिंग वो बढ़ती रहती है। As the tiny baby grows bigger in size, other faculties also develop. This stage is an important landmark in man's growth. It can't go on forever. तो वही जो हमने अभी लास्ट आंसर में डिस्कस किया है, दैट देयर इज अ लॉस ऑफ वन फेस, बट दैट लॉस इज लीडिंग टू अ गेन ऑफ अनदर फेस, जो इम्पोर्टेंट है। आप हमेशा बच्चे बनकर या बच्चों वाली दुनिया में नहीं रह सकते। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू कम एंड लिव इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है। जो एक्चुअल में जो वर्ल्ड है आपको उसमें रहना है। सो यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर फैकल्टीज आर डेवलप्ड, ओके। आपकी जो फैकल्टीज हैं वो उसमें से डेवलप्ड होती है उसके अकॉर्डिंग। चाइल्डहुड बीइंग अ स्टेज मस्ट गिव वे टू अनदर स्टेज। इट इज फॉलोड बाय adolescence or early youth. Now all the faculties are fully developed, so this is an age of your adulthood, okay, कि आपकी जो सारी फैकल्टीज हैं वो डेवलप्ड हो गई है कम्प्लीटली। दैट्स वाई ही सेड कि नाउ माई माइंड इज माई ओन, कि वो अब तो जितना भी है उसमें, मतलब जितनी भी सारी बातें हैं, सारे एक्शंस हैं, वो खुद से ले सकता है, वो खुद से उन्हें फॉलो अप कर सकता है, ठीक है। तो दैट इज वाई ही वॉन्ट्स टू से द पर्सन एक्वायर्स रीजनिंग पावर हिज रैशनलिज्म। अब आप देख रहे हैं ये वर्ड जो है रैशनलिज्म, हिपोक्रेसी, तो आई एम स्ट्रेसिंग इट अगेन कि आप अपने आंसर्स में इन मेन वर्ड्स को जरूर इंक्लूड करना, ठीक है। प्लेस दीज इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन योर आंसर्स लाइक दिस, कि जो की वर्ड्स कहते हैं ना उसको, तो द examiner's attention goes towards that thing, helps him to decide truth or falsehood, fact and fiction. यही जब उसकी पावर डेवलप हुई तब उसे समझ में आया कि ट्रुथ क्या है, फाल्सहुड क्या है, फैक्ट क्या है, फिक्शन क्या है, इमेजिनरी क्या है, रियल क्या है। ही एक्वायर्स अ फाइन capability of analysis and discrimination. So these are very good words that you can use in your answers. That's why I have included this question in this note section, so you can use these words when you make notes of the poem. Now you can see थ्रू पर्सन एंड थिंग्स। सी थ्रू पर्सन एंड थिंग्स मतलब कि एक्चुअल में लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं, पर्सन एंड थिंग्स क्या कर रहे हैं, तो यू कैन सी एक्चुअल इन एक्चुअलिटी। ही बिगिंस टू अंडरस्टैंड द हिपोक्रेसी ऑफ एडल्ट्स। जो हिपोक्रेसी है एडल्ट्स की अब उसे समझ में आने लग गई है, फाइन, कि अब उसे प्रॉपरली समझ में आ रहा है कि एडल्ट्स एक्चुअल में कितने हिपोक्रेट्स होते हैं। क्राफ्टी, मैनिपुलेटिव, जो हमने अभी वर्ड्स लास्ट उसमें डिस्कस किए थे। he gains confidence and becomes an independent thinker, मतलब now he is completely having a very good sense of self control, ठीक है। there is a very good he has gained a power of self control. And he is capable of controlling his own actions and thoughts and also how he responds to others actions, ठीक है। मतलब अब ऐसा नहीं हो सकता कि anybody is telling him anything and he is then reacting to that. Basically a well informed, fully informed and what you can say, a completely rational human being, okay, he has been changed into. So we can mention like this: a completely informed, and rationalistic person. So this is the positive of being
turning up into the adulthood, right? So this is important. You can use these words, you can use this sentence in your answers. And now let us have a quick, recap, or we can say a quick touching on the major themes. And another question that just crossed into my mind and I thought of sharing with you कि किस तरीके से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो भी आप चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं, जो पोम्स आप पढ़ रहे हैं, उनके बीच में या आपस में कनेक्टिंग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि इन दोनों जो पोम्स हैं उनकी थीम को कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कीजिए, या फिर वो सिमिलर कैसे हैं, ठीक है. जो पोम्स होती हैं जो सेम रहती है, लाइक दिस. So now coming to this thing, these are the major themes as we have discussed already. Hypocrisy, okay, realization of how things and people actually operate in the real world, that is different from childhood. इसको दो चीज़ें रियलाइज हुई. फर्स्ट इज कि जो चाइल्डहुड में हम बिलीव करते हैं, ठीक है, चाइल्डहुड में जो हमसे कहा जाता है कि ऐसा है, वो ऐसा नहीं हो रहा है, फाइन. और दूसरा ये कि जो एडल्ट होते हैं, he has especially mentioned adults, कि जो adults होते हैं they preach and practice different things. Whatever they are preaching is different from whatever they are actually practice, ठीक है. तो ये एक important theme है जो poet ने discuss किया है. Sadness and sense of loss. Sadness and sense of loss क्यों? क्योंकि ये again that is on the feeling of childhood, ठीक है, on childhood being gone away. ये सैडनेस है और सेंस ऑफ लॉस भी इसी से कनेक्टेड है कि चाइल्डहुड चला गया है और अब वो वापस नहीं आएगा. कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटी, ये पॉजिटिव साइड है एडल्टहुड का, ठीक है, दैट आफ्टर ही हैज अ पॉजिटिव साइड ऑफ बीइंग एन एडल्ट. मतलब सब कुछ बुरा नहीं है, बेसिकली व्हाट ही ट्राइज टू एम्फेसाइज कि वी शुड नॉट थिंक लाइक दिस, कि हमें कम्प्लीटली इतना डिजेक्शन में नहीं होना चाहिए. इनोसेंस चला गया है, ठीक है, ठीक है, दैट इज यस, दैट इज अ सैड थिंग टू नो कि वो इनोसेंस नहीं है. लेकिन वो जो बाकी आपकी कैपेबिलिटीज डेवलप हुई हैं, आपकी जो एबिलिटीज डेवलप हुई हैं, कौन सी एबिलिटीज? एबिलिटी टू रीजन, ठीक है, एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, एंड द थर्ड इज इंडिविजुअलिटी, द पावर, the self control, okay, the power of your own thinking. सबसे बड़ी बात जो ये लर्न करी पोएट ने वो ये कि now he can control his own actions, basically he can think on his own, ठीक है, कि अपने ऊपर उसे वो खुद से थिंक कर रहा है, he is thinking on his own. एंड द सेकेंड इज इंडिविजुअलिज्म, द सेम थिंग जो अभी हमने थर्ड पॉइंट में डिस्कस किया. तो ये एक इंपॉर्टेंट थीम है. तो ये मैं बार बार इस चीज़ को स्ट्रेस करती हूँ, ये जो वर्ड्स हैं रैशनलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, ये आपने अपने आंसर्स में इंक्लूड करने हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप इन्हें अपने आंसर्स में इंक्लूड करेंगे तो वो एक पूरा कंप्लीट आंसर बन जाएगा आपका कि येस यू हैव कवर्ड अप ऑल द मेजर इश्यूज एंड टॉपिक्स दैट वर बीइंग डिस्कस्ड इन द पोएम. एंड द लास्ट थिंग इज दैट ही कम्स अप इन द लास्ट पैराग्राफ दैट मेमोरीज फेड अवे, ठीक है. जो मेमोरीज होती हैं वो डेफिनेटली चली जाती हैं. अब जैसे कि उसकी जो मेमोरी है चाइल्डहुड की वो चली गई है, फाइन, लेकिन अगेन ही एंड्स इट यू कैन से ऑन अ पॉजिटिव नोट, ठीक है. भले से उसका चाइल्डहुड चला गया है बट चाइल्डहुड विल रिमेन फॉर एवर, ठीक है, उसका नहीं तो और बच्चों का, एंड लाइक दिस इट विल गो ऑन. ऐसा नहीं है कि उसके चाइल्डहुड के साथ जो चाइल्डहुड कॉन्सेप्ट है दैट इज ओवर, ओके. सो बेसिकली ही एंड्स द पोएम, यू कैन मेंशन दिस सेंटेंस दैट बेसिकली ही एंड्स द पोएम ऑन अ पॉजिटिव नोट, ठीक है. एक पॉजिटिव नोट में वो पोएम को एंड करता है कि येस माई चाइल्डहुड इज गॉन बट आई कैन स्टिल सी द इनोसेंस एसोसिएटेड विद दिस फेस ऑन द फेसेस ऑफ अदर इन्फेंट्स, ठीक है. So that sense of loss is there, but this feeling of positivity is also there, that yes, not all is lost forever. ये लाइफ का एक फेज है जो चलता रहेगा. मेमोरीज फेड अवे, ओके, मेमोरीज फेड अवे, दे गो एंड दे विल बी टेकन प्लेस बाय न्यू मेमोरी. सो दैट इज द थिंग.
So you can expect a question like this also, because these kind of questions generally ask for your own perception. Okay, इनके आंसर्स आपको कहीं ऐसे मिलेंगे नहीं एज सच, और ये क्वेश्चंस होते हैं जो आपका परसेप्शन जानना चाहते हैं, एंड द परसेप्शन कैन बी डिफरेंट फॉर ईच चाइल्ड. So do practice this question. Explain how a photograph and childhood explores the concept of loss. किस तरीके से वो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस, कॉन्सेप्ट ऑफ सैडनेस, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीफ एक्सप्लोर किया गया है दोनों पोम में, जो अभी हमने पढ़ी है, फोटोग्राफ एंड चाइल्डहुड. ठीक है, अब फोटोग्राफ में मदर का लॉस भी हमने काफ़ी डिस्कशन किया था, सो यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट. एंड चाइल्डहुड अगेन, तो दोनों में क्या कॉमन है एंड इन वॉट वेज बोथ ऑफ देम आर सिमिलर, क्योंकि जो दोनों पोम्स हैं उनकी थीम में कॉमनैलिटी है. और वो कॉमनैलिटी क्या है कि बोथ द पोम्स एक्सप्लोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, ओके, एंड द फीलिंग्स एसोसिएटेड विद इट्स पासिंग अवे. तो ये आपको इस क्वेश्चन पे यू नीड टू वर्क आउट. आप अपने आंसर्स लिखिए और डू शेयर योर आंसर्स, एंड इफ देयर इज एनी डाउट, ओके, रिगार्डिंग द पोम, रिगार्डिंग द एक्सप्लेनेशन, प्लीज लेट मी नो. हम दोबारा से उस पर वर्कआउट कर सकते हैं. एंड दिस फिनिशेज योर चैप्टर. आई हैव ट्राई टू इंक्लूड ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस that you can expect in the exam, okay, along with the line to line explanation. So do go through this video again, and if you find anything doubtful, please connect with me through comment section. And I hope you like the video, and if you like the video, do share, like and subscribe the channel. You can also watch other videos of different subjects on the channel, and I'm sure all of them are going to help you a lot in your studies. Thank you. That is all of now. We are going to meet again tomorrow with a new topic.